તો દહેજની જીએફએલ કંપનીમાં ગેસ ગળતરની ઘટનામાં મૃતકોના પરિવારને 40 લાખ રૂપિયાનું વળતર અપાશે। આટલી મોટી ઘટનાના કારણોની તપાસ વચ્ચે ધારાસભ્ય અને સાંસદે કંપનીની મુલાકાત લીધી। સાંસદ મનસુખ વસાવાએ મૃતકના પરિવારજનોને મળ્યા બાદ વળતર વધારવાની રજૂઆત કરી હતી, જે બાદ હવે 10 લાખની રકમ વધારી 40 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવાશે। તો આ મામલે સેફટી એન્ડ હેલ્થ વિભાગની ટીમે કંપનીમાં તપાસ હાથ ધરી डेटा एकत्रित करवानी कार्यवाही पण शरू करी। उल्लेखनीय है कि जीएफएल कंपनी में गैस गळतरनी घटना 4 कामदारों मृत्यु थया हता। आ मामले सांसद और धारासभ्य सरकार में रजूआत करी योग्य तपासनी पण खातरी आपी है। कां तो भरूच में एक सारामां सारू मोटू होस्पिटल बरोड़ा के सूरत में छे एवा प्रकारना होस्पिटलनी पण अमे बधा साथे रहीने सरकारमां रजूआत करीशुं अने आवी घटना अलग अलग उद्योगों न घटे एना माटे पण आवनारा दिवसोमां हूँ अरुण सिंह अने बाकीना धारासभ्य बधा भेगा थईने अमे एक कलेक्टरना जवाबदार लोको साथे मीटिंग करीने एमनुं ध्यान दोरीशुं अने जे कंपनीओमां क्यांक ने क्यांक जे सुविधानो अभाव हशे तो एनुं पण अमे पूरेपूरी चेकिंग करावी अने आ जे पण क्षति हशे दूर करावीशुं।